Okay, morning everyone. So today we will start the SQL. Okay. এটা কোন SQL কোয়া যায় না SQL কোয়া যায়? SQL কয়া কথা. Okay, SQL is not the correct terminology. You should call it as SQL. Right. SQL, what is the full form of SQL? Structured query language. Okay, so এটা আমার গোটে standard language for any database. Okay, whatever the database you are going to use, your language will remain the same. Both slight modifications ଥାଏ when you go from Oracle to SQL Server କି Snowflake, ଏମିତି when different database ରେ ଯେତେବେଳେ use କରିବ 99% it will remain the same. ହେଲା, depends on କୋଉଠି for example top 10 rows ଦରକାର SQL Server ରେ you will say top, ଯୋଉଠି Oracle ରେ it will come limit. ଏମିତି minor changes ଥାଏ but concept wise it remains the same everywhere. Our same select statement ଆମେ ଯାହା ବି ଶିଖିବା same thing you can utilize in any of the databases. Okay, whatever the database, if it is Oracle, SQL Server, MySQL, whatever the database by any company, your language will remain the same. Okay. SQL majorly we will have 4 different languages. Okay, what are they? DDL. Okay, DDL mane kona data definition language. Okay, and then we have something called DML. DML mane data manipulation language. And then we have most important DQL. DQL mane data query language. Okay, tapare we will have DCL, data control language. Okay, so out of all these 4, okay, let's see. Data definition language majorly we will use create, alter, drop. Okay, data manipulation language update, delete, now truncate, insert. Okay, these are the major things we are going to use. तापरे DQL रे majorly select statements को आ जाए, but एथेरे select statements रे कौन आसे basically select from where, group by having, order by. এটা को आ जाए big 6 statements of SQL. এটা होची foundation. If you are clear with this 6 statements we use gonna, majorly you can do everything. Okay, without this you cannot do anything. A 6 statements तक हमको clearly बुझिया पड़े. Okay, these are called big 6 statements of big 6 elements. Okay, माने एटा होची foundation. This is something you should know, must and should. Anybody says कि मते Power BI I am an expert and I am at the basic level of basic SQL मते जाना माने basic means he should know these 6. Okay, right. And then we have data control language, grant and revoke. Okay, these are the uses. So out of these things,
for a front end developer माने database रो connect करके जिए reports बनाए dashboards बनाए, right? So front end developer पाइंका this is the one important. एथेर आउरी बहुत किछि आसियो, joins आसिबो, union आसिबो, एरा सब एथेर आसिबो, okay? DQL रे. So this DQL is important for him, okay? Why not DDL, DML, DCL? The reason is they will not provide you access for this one. तमे किछि भी कॉलम को अल्टर जदि कर देलो, फॉर एग्जांपल जो भी टेबल को तुमको एक्सेस अछि, यू हैव अल्टर्ड द डेटा टाइप के किछि भी अल्टर कर देलो, तुम प्रोजेक्ट तो जीवो जीवो से टेबल जो जो प्रोजेक्ट रे होला एवरीथिंग विल बी डैमेज्ड, ओके? सो इट इज रिस्की, बहुत रिस्की. तुम जदि बेस टेबल को अल्टर कर देलो हैला, एंड दैट टेबल इज यूज्ड इन मल्टीपल रिपोर्ट्स, बहुत सारा रिपोर्ट से इट विल बी यूजिंग, राइट? देन इट इज गोइंग टू create a huge problem. Eta source re hi habo. Ame now we are talking about source only. This is the source. Now we are talking only about the source data. SQL mane we are talking about source data. Power BI no. And front end no. We are talking about only back end now. Okay, तो एठी जदि तमे कोन अल्टर कर देलो कि ड्रॉप कर देलो गोटे टेबल, गोटे इंपोर्टेंट टेबल, ट्रांजैक्शन टेबल जोटा भी हैला, it बेसी टाइम ना ड्रॉप टेबल ना दे के एग्जीक्यूट कर देले, एंटायर टेबल विल बी गॉन हैला. सो दे विल नॉट प्रोवाइड यू एक्सेस टू दिस वन. खाली who is the database person, database ro admin je thibo ki senior most person je thibo, only they will be having access to this one. That too in the development environment. Production painga mane bahut sara restrictions achi, kaina actual data seiti thae, seita ko jodi ame alter delete kom kar deba, it is going to be a huge problem. So we will see examples of these things, but generally we will not use this one, okay? तापरे DML manipulation also same thing. तमे unnecessary data insert कर देलो, update कर देलो, delete कर देलो, okay? Truncate is also a kind of delete only. There is a difference between drop, delete and truncate. Interview point of view question. Difference between drop, delete and truncate. I will tell you later on. So एरा सब कौन हबो ना, तम source data को manipulate कर देबो, okay? So which is a dangerous thing, big thing, okay? Unless until it is mandatory required with all the approvals you have, then only you will be doing. You money database person, you will not be doing anything here, okay? So they will be doing changes, but data contact ना दिल्ले भी लोअर एनवायरनमेंट से दिया जाए. लोअर एनवायरनमेंट माने को ना डेव एनवायरनमेंट. अच्छा हमको जो हमें चलो न देले हमें जति ओटे क्वेश्चन करते जे कि प्रीवियस ईयर को जाते हम ओटे नवा कॉलम बनिया ना, तो सेफ्टी लेवल को जे बने से कॉलम तमे काहे के बनेबो, बैक एंड रे तमे काहे बनेबो, पावर बी रे बने जदी इफ यू वांट इट इन द सोर्स लेवल, हु विल डू? डेटा इंजीनियर जे सीए बने के दबो. एबे तमे डेटा इंजीनियर है ना. But still generally data engineers be only lower environments they will give the access to create. Production re ete easy re they will not give. Development re tame create करलो, तापर किछि भी disturb हैला ने, everything is good, testing रे से मन check करिए सेटा. जो data engineer गोटे नोआ कॉलम बनेला गोटे टेबल रे कि नोआ टेबल बनेले, सेटा प्रॉपर्ली रिफ्रेश होउची कि नहीं, टाइम टू टाइम डेटा लोड होउची कि नहीं, ता पाएगा अलगा रिलेशंस किछि खराब हैला ने, एवरीथिंग दे विल टेस्ट इट इन UAT, ओके? तांखर रियर भी तीनटा एनवायरनमेंट्स थाए, डेव, UAT एंड प्रोडक्शन, राइट? आमे भी सेम थी कनेक्ट करिया, राइट? तो UAT रे दे विल टेस्ट ऑल द थिंग्स व्हाट दे हैव डेवलप्ड. टेबल बनेले कि जहां भी करले सेरा सब टेस्ट करिए UAT रे. यदि UAT रे दे फाइंड इट एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन as per माने जेमती भाबुथिलो सेमती everything is working fine, then they will deploy it to production. Same code टाको आमे जेमती report deploy करछो तेमन SQL code को deploy करिए to production, okay? Right. So but DQL is out पर data control language होचे access related part. Developer को they will not require access to the entire database की तादर 100 tables होचे, सब 100 tables को access दरकार नहीं. You may require only 5 to 6 tables of data for creating a report, right? Say 5-6 report table पाएंगे, they will provide the access. किमते provide करे by using grant statement, okay? तापर यदि it is not required, they will revoke the access from there.
So this is the work of the admin, database admin je thibo. Once he gets a ticket saying that these email IDs should get access to these tables bole tanga pakku jetol ticket raise hoba setol they will use this statements and they will give the access or they may revoke the access. Okay, so for us this is the most important part. We will see examples of each and every one later on, but for us the major thing is DQL. এটা कोन पाएंगे दरकार एथरे बैकएंड डेटा किछि मैनिपुलेट होबानी हमें डेटा को रिट्रीव करके रिजल्ट देखुछु. Okay, whatever the data is already present, by writing some queries हमें तारो result देखुछु. से result ताको Power BI report result संगे match करिया को try करूछु. For that what we need DQL, data query language. Everybody following? Yes, sir. Saroj, Deepti. Yes, sir. Okay. Any questions? Pachariva. Right. So let us start with the DQL. I'm not going into theory ki SQL ketal start hela, k start kala, those things and all is not required. If you want, you can go through the Google karke, you can do it. Okay. Right. Tapore, okay. Let's start with the DQL first. Okay, let's connect. For example, go to see SSMS, right? This is called SQL Server Management Studio. माने एटा होची प्लेटफॉर्म वेयर यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द क्वेरीज. आ भितर डेटा किछि स्टोर हुए नहीं. SSMS रे डेटा किछि स्टोर हुए नहीं. This is just a platform where you will write and execute your queries. Data कोड स्टोर हुए सर्वर रे स्टोर हुए. We have installed SSMS how SQL Server भी. So server is the place where data will be stored. SSMS is the place where you write your SQL queries and execute it. Okay. So SSMS रे can I connect to multiple servers? Yes, we can connect. एठी हमें गोटे सर्वर को कनेक्ट कले. आ गोटे सर्वर अछि माने एटा फॉर एग्जांपल dev server. Right now we cannot install multiple servers, so we have only one server. तादर हमें multiple database बनै छै. But real time environment रे कोन है, they can have different servers for different environments. Every data गोटे सर्वर रे स्टोर हे दिबो. UAT रो आ गोटे सर्वर रे, प्रोडक्शन रो आ गोटे सर्वर है. So we cannot install कि तीनटा मैनेजमेंट स्टूडियो हमें इंस्टॉल करके तीनटा different कनेक्ट करिया नहीं. एठो एका you can come here and click on database engine. आ गोटे सर्वर तमे एठी कनेक्ट कर परियो. Okay, similarly जेते servers you want, you can give the server name, username and password, you can connect. एठी जेमति गोटे देखो जे आ तले आ गोटे आसियो, आ तले आ गोटे आसियो. Okay, तमे एठी expand एटा को माने जदि तमे UAT रे अछो एठी आ तले आ गोटे देखा जियो. Similarly ताको तमे expand करके you can see the tables in the UAT environment. Okay, so from same SSMS you can connect to multiple servers. Okay, each server will have multiple databases. Each database will have multiple tables. Tables hella view hella. What is a view, what is a table, I will tell you later. Okay, database को expand कर ले, you have multiple databases. Database expand करके tables को expand कर ले, these are the tables. But in general एटा होची base table माने जो थरे actually data store होची हैला. But real environment रे तुमको tables मिलिया बहुत rare. They will create views माने केमते create करले, those are for aggregate tables. माने कौन करिए, for example in a table you have 30 columns. हमें जंते पावर क्वेरी रे ग्रुप बाय करथिले. Okay, 30 columns अछि, but we don't need all the 30 columns. माने granularity केमिति होची. For example, let me show you. For example, date dimension अछि. Okay, date dimension रे हमरो date column अछि, तापरे year column अछि, तापरे quarter column, तापरे month. Okay, week. Like this we have data. But analysis हमें जितल करछो, maximum our level we want to go till monthly level data ही हमें जिबाक चाहूछु.
हैला मंथली लेवल जाई ही जीवाक चाहो तो आम प्राइमरी की कौन हम मंथ जोटा मंथली माने फाइनल सेटा तो सेटा सांगरे ही वी विल कनेक्ट टू द फैक्ट टेबल मॉडलिंग हमें शिखिदेलु राइट तो ए वीकली इन्फॉर्मेशन आपर भी जदी आउ कोन इन्फॉर्मेशन होची वी डोंट वांट इट राइट तो आमे कोन करिया आमे ग्रुप बाय करिकरी ओनली दीस कॉलम्स व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड with that only a date भी दरकार हबनी ओके with these three columns only we will create a view ओके सेतल कोन हम गोटे ईयर 365 डेज थाए से 365 कोन हबो ओनली 12 रोज रे कन्वर्ट ही गयो and we want to analyze up to monthly level data only so there is no point of having a date column ki week column हमको दरकार नहीं so similarly what they will do they will create aggregate tables आपको कौन को आ जाए aggregate tables और group by tables both are same तो हमें कौन करिया जेतिकी माने डेटा इंजीनियर कौन करियो जेतिकी कॉलम्स दरकार out of the column for example what example कुछ okay we have these many columns for example हम रिपोर्टिंग पाइन के एते कॉलम दरकार नहीं हम कौन दरकार कैटेगरी सब कैटेगरी सेगमेंट सेल्स प्रॉफिट and quantity these are the 6 columns required for our analysis purpose so why should we get all this information हमें जेतिकी information दरकार only those columns we will keep it other columns we will remove it माने remove माने कौन ग्रुप बाय करके remove करिया खालटारे remove कले the number of rows will not change पावर क्वेरी रे हमें कौन करथुलु जेति हमें जेतिकी कॉलम दरकार if you select that and remove other columns कौन हबो it will remove other column but the number of rows will remain the same want me to show again ना बुझिला ना बुझिला तो सेम वे से माने कौन करिए SQL query रे लिखिबे okay they will write a query with the required columns and group by करिए group by करके कले कौन हबो unnecessary rows and columns will be removed तम डेटा माने जो व्यू बनेबे सेटा व्यू बनाते the view रो साइज छोटो हे जियो राइट that they will expose it to Power BI developers नहीं 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 बेस टेबल सेमती थिबो बेस टेबल ऊपर आउ गोटे टेबल भलिया बनेबे जो थरे के ए इन्फॉर्मेशन थिबो ए इन्फॉर्मेशन ता तुमको एक्सेस देबे जो बेस टेबल तार एक्सेस देबे काइना दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू आल्सो they will create a new table not table view actually से view रे हमको जेते की information दरकार सेते की information रो view बनेगी that will be exposed to front end people माने तारो access तुमको दिया जीवो हैला तो ताकू तमे कनेक्ट करी करी you will develop your reports Power BI पाइंका whether it is a view whether it is a table it doesn't matter Power BI will consider both table or view in a similar way okay So they will create those views and they will give it to you. Okay. Right. So let's see how to use each one. Select. Select okay. How to start it? एटा को आज ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर एतरे सब ऑब्जेक्ट्स था जेमते डेटाबेस गोटे ऑब्जेक्ट टेबल गोटे ऑब्जेक्ट व्यू गोटे ऑब्जेक्ट stored procedure गोटे ऑब्जेक्ट these are all called objects okay so a place you will get all the objects this is again called as ribbon menu this is called new query upar click kale this is called the query window and you can write all your queries here and execute okay now एठी जोटा अछि this is the database where you are going to write your queries हमें जो database रे query लेखिया को चाहिबा first that database you need to select from here okay so for example I am selecting master is the default database तमे जो database रे queries execute करिया को चाहिबो से database समय एटो select करियो ए server under रे जते सारा database होची सब एठी देखैबो okay so I will select for example adventure works dw 2022 okay एथरे कौन कौन tables अछि देखिया okay these are the different tables we have right so for example I want to see the data in fact call center देखिया okay fact call center रे कौन tables अछि you can expand here एठी तुमको column names में देखा दियो different column names adire foreign key quota okay primary key quota those things and all will be here this we will come back later jetala me table create kariya create statement use kariya then I will tell you all those things okay so now I want to see the data available in eta me restore करथिले ना
Hmm. अच्छी. Right. So, for example, one fact table we will take. For example, fact call center हैगोला कि fact finance हैगोला anything. Okay, let's see fact call center है कौन information अच्छी. So I will start with my select statement. It a case sensitive no. Okay, you can use capital letters, you can use small letters. I think mixture of things also we can use it. Okay. Okay. Select start from fact call center. Okay, other capital achi a gote small achi, it doesn't matters. Okay, and then execute. So whatever the data is available in that table we will get it. So star mane kono, basically what is star means all the columns available in that particular table. And one more thing you need to be very careful ki these statements needs to be in the same sequence. Okay, a order re hi rahyaku padiyo. You cannot use the group by before where. Okay, you cannot use where after group by. ଯଦି group by use କରିବାର ଅଛି ତମେ where ପରେ ହିଁ use କରିବାକୁ ପଡିବ. ଓକେ, ଏଇଟା ଏଇ order ରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡିବ. You can skip this one. For example, ଏଇ ଦିଟା ନ use ନ କରିକି select from where and order by you can use it, no problem. But if you want to use group by or having, that has to be before order by. Okay, or else it will not execute, error ଦେଖେଇଦବ. Right, order has to be in the same order. Eta mon rakhiବାକୁ ପଡିବ. Select from where group by having order by 6 elements. Okay, right. So star mane kono, you will get all the columns available from that table. Okay, eta next line le likhte bhi kichi problem nahi, you can execute this one. Okay, right. Star is nothing but all the columns from that particular table. Jedi specific columns darkar. Okay, we want only specific column. For example, a through we need for example date key darkar, shift darkar, and calls. These 3 columns only we need. Okay, out of the entire table we need only 3 columns. For example, so kaun kariya hame select the column names you need to provide. Select statement re jaha bhi dabo tame, that will be your result. Okay, select table re tame 5 ta column dabo, tama result re sehi 5 ta column asiyo. Select table रे तमे जदि माने किछि भी कैलकुलेशन आमे करिया पर कैलकुलेशन, बेसिकली select table रे तमे select statement रे जहां भी लिखियो, your columns will be same in your result. So one way you need to think कि तुमको result कौन आसिया रची जदि तमे जानि थिबो, accordingly you can write the select statement. Right, so मते होइका requirement हैला I want to see the date key, shift and calls. ए तीनटा columns I want to see. So what I will do, select date key comma K capital. Okay, and better you need to do what, आगे तमे star कर दियो, from same thing again I will execute. Okay, okay, again same thing. Now you can edit the star. एतल कौन हबो तुमको, it will show you the column name. Okay, काहेकि ना already it understood that from this table only you need to take the columns. Okay, तो आगे तमे from को execute कर देले, तापरे it will give you the intelligence कि ताधेरे कौन कौन column अच्छी. Based on that, if you give 4-5 characters, it will take the column name. यदि तमे from लेखो न कौन हबो, it will not understand कि तमे को table पाएंगे लेखो चो. Right, so date की जो भी अलग table it will be there. यदि तमे adventure works restore कर जो कथा which database you are executing, the database को select करें. Okay, date की comma shift comma calls.
shift to function भी सेट देखिए okay but still it is executing okay so हमको select statements रे whatever the column names you are going to put the result will be the same हमें result रे जहाँ देखिया कुछ आओ जो सेटा select statement है you need to put if you need more number of columns you need to put comma दे किरे you need to keep on giving the column for example automatic responses you want okay from माने कौन को टेबल रो तमके ए कॉलम्स दरकार ओके इट इज माने टिके एटा सिंपल इंग्लिश वाले लैंग्वेज एटा ओके select these statements from this table right तापर for example I will take a fact table okay ना एटा ही था okay select from clear if I मुझे यदि select ना करके execute करिवे for example मैं का select करू नहीं को query को नहीं आसीबो हां ସେଇଟା ମୋର ପଡିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ପଡିଲା ଅଛି ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ कोन एरर कोन असला कोन सबने you have already created तमे कोन करथिला म सेटा बुझिले जे म सेतल कहले ने तमे निजे फाइंड आउट करिया पइका तमे क्रिएट डिम प्रोडक्ट करथिला ता तले इंसर्ट करछो डेटा एग्जीक्यूट करला फर्स्ट क्रिएट ता सक्सेस हे गला इंसर्ट रे प्रॉब्लम आसिला तापर जेतल तमे फोन करिया चाहिला ऑलरेडी तम टेबल थिला ता ऊपर आ गोटे थरा फोन क्रिएट करछो पूरा एग्जीक्यूट हैला ऊपर दला तो ऊपर जेतल एग्जीक्यूट होतला तार टेबल ऑलरेडी फॉर्म हे जाईचे तमे आउ थरे फॉर्म करूछो सेते पाए एरर आसिला ताम बोली ना सिलेक्ट करी के एग्जीक्यूट सिलेक्ट करले जहां सिलेक्ट करियो सेटा ही एग्जीक्यूट होबो यदि सिलेक्ट न करले ऊपर जहां भी थिबो एवरीथिंग इट विल स्लोली एग्जीक्यूट एंड कम सो हियर नाउ वी हैव टू स्टेटमेंट्स तो दीटा जाको एग्जीक्यूट होबो दीटा रिजल्ट आसीबो फॉर एग्जांपल इफ आई एग्जीक्यूट ऊपर रो सेटा बिना सिलेक्ट करके मुझे तो एग्जीक्यूट करले आर रिजल्ट हैला एटा आर रिजल्ट हैला एटा हां हाइलाइट करने मु नहीं हाइलाइट करके करले सेही गोटे एटा एग्जीक्यूट हबो टर्मिनल टा मोर बड़ क्लोज करो हैला हां कोन हैला टर्मिनल टा क्लोज करो तमे एठी कोन लेइथिबो ए मेसेजेस पाखरे रिजल्ट अछि ना रिजल्ट पर क्लिक करो रिजल्ट नहीं execute side रो टिक मार्क अछि का साइड and रो affected एंत कोन कर देले जदी हमें गोटे माने क्वेरी टेबल रे जदी सिलेक्ट किबा अलगा यूज करू ताले सिलेक्ट करिया पड़ियो जदी मु करथि भूल करथि इंसर्ट करली हां सिलेक्ट करली तर इंसर्ट करली सेही केस रे मु सिलेक्ट करी इंसर्ट सिलेक्ट करी ते एडिट करार अछि हां जदी सेम जदी सिलेक्ट करे त फोटो देखिबो सिंपल तमे जदी तमे सेठी कोन करथिलो डीटीएल करथिलो क्रिएट माने कोन डीटीएल लैंग्वेज डीटीएल रे कोन होय क्रिएट होय सेटा ऑलरेडी क्रिएट हे सार के आउ थरे तमे क्रिएट करछो तमे नेम जदी चेंज करथा तो हे जाय था आउ गोटे टेबल नेम डिम प्रोडक्ट जगह रे डिम प्रोडक्ट 2 जे दे देथा आउ थरे करथिले हे था बट ऑलरेडी जेतल तम पाखरे गोटे अछि पुनी सेम ना रे आउ गोटे करिया करले हबने फॉर बी रे भी हबने ना तमे गोटे मेजर बनेलो आउ गोटे मेजर सेम ना रे बनेले हबने सेम थिंग एठी भी होउची ओके डीक्यूएल रे कोन ना तमे सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखुचो एटा रे मॉडिफाई होबार किछि नाही एटा एग्जीक्यूट हबो आर रिजल्ट देखेबो एटा एग्जीक्यूट हबो आर रिजल्ट देखेबो सेलेक्ट करके करले ओनली दैट क्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड सेलेक्ट न करले जेते सा क्वेरी थिबो सब एग्जीक्यूट हबो फर्स्ट रो जोटा एग्जीक्यूट होला तार रिजल्ट एठी आसियो तापर रो एठी आसियो जदी आ गोटे थिबो ता तले आउटे आसियो how many ever statements you have those many results you will get माने थोरे एग्जीक्यूट हेइतो आउ थोरे पुनी एग्जीक्यूट हबो ना एठी हमें मॉडिफाई करनो किछि भी डीक्यूएल तमे जेते थोर एग्जीक्यूट करो सेते थोर हबो बट डीडीएल रे तमे क्रिएट करूछो गोटे थोर क्रिएट हे गला माने आउ थोरे सेम ना रे हबो नै
नहीं मु जोटा कहली बुझिला ना नहीं तो प्रॉब्लम कोन हम सीधा पचाली एटा थरे हेला पर कोन हेला असुविधा होबन माने डुप्लीकेट एटा सिलेक्ट हो ना क्रिएट हो एटी किछि मॉडिफाई डेटा होने ना एटी खाली हमें रिजल्ट देखु तमे गोटे डैक्स करे लिखिलो हैला सेटा गोटे विजुअल रे पकेलो काम कला सेटा आ गोटे विजुअल रे पकेला काम करियो ने करियो सेम ना रे आ गोटे डैक्स लिखले काम करियो सेम ना ना काहेंगी गोटे वेरिएबल धर नै ए रे गोटे वन पुट हे आ गोटे सेम एठी भी सेम होची तमे यार रिजल्ट देखिया चाहो जेते थरो एग्जीक्यूट करियो सेते थरो आसीबो बट सेटा को आउ थरे तमे क्रिएट करिया को जेते चाहिबो सेम ना रे सेटा होबो नै नहीं एटा सिंपल है का धीरे धीरे जाने को ओके पूरा तासा से कंफ्यूज है जे लेवल पूरा पढ़ा कोनटा एसक्यूएल पूरा यदि दरकार ना पूरा पूरा मु एक जानने मु कोन पढ़े मु जेति जानि जे सेति पढ़े माने डेटा इंजीनियर लेवल रे मते आसे नै ना एते सेटा ऑप्शन डेटा इंजीनियर माने से माने SQL यूज करंती बट डेटा को शिफ्ट करया पाएगा दे विल यूज एडीएफ हे गला एसएसआईएस हेला इन्फॉर्मेटिका हे गला बहुत सारा अलग टूल्स यूज हुए हम डेटा एनालिस्ट हिसाब रे मु जेति कोची सेति के मोर देन एनफ सर मोर क्वेश्चन है सर मो कहले ए जो इते उसमें एसक्यूएल होला माई एसक्यूएल होला से तो बिग बिग कंपनी तो सेम तो चाहिए एते लेखा लेखि न करे बटन सिस्टम करथाते क्रिएट बटन मारले एते यात्रा में क्रिएट लिखिया को नहीं तमे एते इजीली मॉडिफाई कर परियो नै विदाउट राइटिंग कोड यदि बहुत सारा कॉम्प्लेक्स जो करियर थिबो तमे क्लिक ऑफ द बटन रे करिया ते फंक्शन में काम करियो न मतलब गोटे क्लिक हां माने यदि सेमती हेई पर थांता काई करिए नै हेई परियो नै क्रिएट लेखो स्टार लेखो स्पेस दवा पाई नहीं ता पाएंगे भी फॉर एग्जांपल तमे एठी आसीबो ए टेबल है ला ओके ए टेबल ऊपर जे मैं एठी कास की न्यू टेबल एठी तमे देई परियो कॉलम ना डेटा टाइप ना एटा देई करी तमे कले ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट हे जिवो बट आठो सेटा इजी रहइबो हला डेटाबेस करिया पे सेमती तमे करि परियो बट एथरे तमे ना बहुत जिंस करि परियो नै ओनली फ्यू थिंग्स ओनली यू कैन डू इट बट क्वेरी लिख लेवल यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स बहुत किछि मॉडिफिकेशन सब किछि करियो सर हम एटा भी देख परियो जेंति हम एथरे कॉलम देख परछे डेटा देख परियो डेटा तमे क्रिएट करला बोले भी तो डेटा आसीयो नै तमे जेतले क्रिएट स्टेटमेंट लिखियो क्रिएट टेबल तार कॉलम नेम देखि जेतले एग्जीक्यूट करियो तादेर भी डेटा आसीयो नै खाली स्ट्रक्चर आसीबो एठी भी खाली स्ट्रक्चर आसीयो तापर जेतले तादेर डेटा इनपुट करियो डेटा आसीबो आदेर भी सेमती डेटा को इनपुट करियो पड़ियो ओके ऑनलाइन एवरीबॉडी फॉलोइंग यस सर राइट ओके सो सेलेक्ट रे तुमको कौन देखियार अछि रिजल्टेंट टेबल रे जहां जहां कॉलम्स तुमको देखियार अछि दोस कॉलम्स वी विल पुट इट ओके स्टार देले कोन हबो इट विल टेक द एंटायर all the columns in that particular table from there obviously you need to provide the table name from where you want to take the columns right and next it comes where clause okay so for example मु चाहू छी from here okay the calls which are less than 200 I want to see हैला हां हां तो हमें कौन करिया less than 200 calls जो रखो छी only that data I want to see so what I can do I will write a where condition okay मु कौन कहू छी select date key shift calls and automatic responses from this table तापर मु कहू छी कि गोटे filter condition दउ छी कि where calls should be less than 200 okay call should be less than 200 execute this one the calls समय देखियो everything will be less than 200 right so basically हमें कौन कर लो का if I want to show you in Power BI if use करछे where use करछे
जदि एटा सेम जिनस मते पावर बीआई रे देखियार अछि हमें कोन करिया को दिस इज द रिक्वायरमेंट okay for example fact internet sales tapore na eta dekha seti bi mo change kari dim product he gala dim customer he gala ei dita na okay okay so for example it will be select start from fact internet sales okay आज you know for example I want only specific columns ଯେମିତି କି product की हे गला तापरे sales territory की है गला कॉमा freight okay okay 8 for example now the same thing I want to create it in Power BI what I should do this result I want to see it in Power BI मते खाली 8 result Power BI रे देखार अछि टेबल रे डेटा आसी गलानी मते तेरा सब न कोन करबी को मते कोन दरकार I want this result मु कोन करली fact internet sale रो ए तीनटा कॉलम नै करे मु टेबल बनैले सेम टेबल टा I want to create it in Power BI तो विजुअल टेबल नै ले हां राइट तापर ड्रीम कस्टमर कोचे आसला सेटा ड्रीम प्रोडक्ट फैक्ट इंटरनेट सेल तो आसला तापर तीनटा जरा दरकार कोन कोन नेले हम एठी प्रोडक्ट की सेल्स प्रोडक्ट की तापर सेल्स तापर ସେତିକି sure हां कौन हबो अब देखो फॉर एग्जांपल मैं एटा को सॉर्ट कर देले सम ऑफ राइट रे हला एटा कोन हला हाईएस्ट टू लोएस्ट हला राइट सम ऑफ राइट सेम जिंसो मैं एठी भी करी एटा मु कहने बट एबे देखौ छी ऑर्डर बाय फ्राइट को करला ना फ्राइट असेंडिंग ओके माने जोटा को सिलेक्ट करके ये करबे सीटा नहीं एटा एठी काम करियो नै मो कैसे जाई नै बट स्टिल गोटे जिंसो करेक्ट है का बट द थिंग इज एठी काउंट हो जे एटा हम काउंट करियार थिला कि सम भी नो हम कोन किछ भी करियार नथला like this we should get right so now जदि मो एठी गोटे फिल्टर पकोचे where sales territory key is equal to 6 okay
ओके खाली 6 रो मते आसियार अछि सो हमें पावर बीआई रे कोन करिया सेल चेटर के ओके एमती हमें सिलेक्ट कर देले वी विल हैव सो बेसिकली हमें जो फिल्टर्स यूज करू जो that filter will be there in the where condition okay power BI when we are using filter but power BI हम पकड़ multiple filters होची जेंति visual level हैला तापर page level हैला तापर report level हैला SQL रे कोन करिया SQL रे सेमते दरकार ही नहीं काहे कि ना we are executing only one query that is visual level only તમે જે તો એક્ઝિક્યુટ કર્યો गोटे पेज सेठी किछि नाही जोथर कि यू कैन अप्लाई एवरीवेयर તમે जो क्वेरी एग्जीक्यूट करियो ता धिरे वेयर कंडीशन यूज करियो तो बेसिकली તમે जदी एठी पेज लेवल रो फिल्टर भी अप्लाई करूछो તમે को विजुअल पाएंगा SQL रे लिखुछो अकॉर्डिंगली यू नीड टू यूज द वेयर कंडीशन देयर ओके सिंपल सो वेयर कंडीशन रे कोन हबो कोटा તમે फिल्टर करिया को चाहुछो दैट यू विल पुट इट हियर ओके सो लेट्स कम बैक सेलेक्ट स्टेटमेंट रे कोन हुए column 1 comma column 2 comma column 3 and so on okay provide all the required columns here जहां पे रिजल्ट तमे देखिया को चाहो છો that provided here तापरे from रे कोन हबो टेबल नेम ओके ऊपर कॉलम नेम्स आसियो from रे टेबल नेम आसियो from which table the required columns okay तापरे where रे कोन हबो filter condition provide the filter condition the filter condition तमे केमते देई परियो you can do equal to you can do greater than you can give less than you can give greater than equal to you can give less than equal to तो पर not equal to केमते हुए एमते हबा सेमते भी हबा तमे जेमते कहला सेमते भी हबा इक्वल टू सेटा ही हबा but you can use this one एमते थाए बोलते ओटे हला this one okay এটা ফার্স্ট আসছে কি চেক করে দেব গোটে থর ওকে তারপরে then between then like okay एगुरा सब वेयर कंडीशन आसियो and also operators आसियो कोई भी स्टेप बाय स्टेप विल गो operators रे कोन आसियो and or okay so let's see between रे केमित हुआ like रे केमित एगुरा सब नॉर्मल राइट equal to greater than less than जहाँ भी थिबो आ गोटे for example equal to रे भी for example let us take some other table select star from dim customer okay so a through for example mate John ro data darkar only for John first name should be John तो कौन करिया हमें सब कॉलम दरकार एमते किछ नै कि दरकार खाली जॉन रो डेटा दरकार सब कॉलम दरकार से जॉन से क्लिक कर ले सिलेक्ट जॉन स्टार्ट काटे कि जॉन ले मते कौन दरकार मते जॉन रो डेटा दरकार ओके बट पूरा सब कॉलम दरकार सब कॉलम में जॉन रो डाटा दरकार हां
सब कॉलम रो जॉन रो डेटा जॉन रिलेटेड सब एथि कोन अछि जॉन अछि फर्स्ट नेम रे बट मते कोन एक कॉलम सब दरकार माने जॉन रो रिलेटेड सब कस्टमर की दरकार हबो ज्योग्राफी की दरकार हबो सेमती फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जॉन केते कोन हबो where first name is equal to पूरा सॉरी नहीं नहीं एटा भी पूरा सॉरी नहीं रिजल्ट आसी नहीं तापर को फर्स्ट नेम इक्वल टू कोथरे एमिति एटा सिंगल कोड रहबो सीक्वल रे सब बेले you need to go with a single quote okay so जितल भी टेक्स्ट वैल्यूज हमें प्रोवाइड करिया we need to provide it in a single quote numeric values किछि करिया दरकार नहीं you can directly give the numeric values text values जेतल दिया हबो then you need to put inside single quote काई खाली जॉन रही तो देखा होची ये लास्ट तो तुम फर्स्ट नेम ऊपर फिल्टर पकईचो सो फर्स्ट नेम रे जोटी जोटी जॉन आसला सेरा सब फिल्टर हे कि वी आर गेटिंग द रिजल्ट ओके तो टेक्स्ट वैल्यू पाए एमती तापर न्यूमेरिक पाएंगे यू कैन गिव ग्रेटर लेस इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जहां दबार थबो यू कैन पुट इट देयर फॉर एग्जांपल मते डीटा कंडीशन प्रोवाइड करियर अछि गोटे हला फर्स्ट नेम शुड बी जॉन आउ तापरे जेंडर तो मेल ही रहइबो last name for example he achi okay marital status single देखिया okay तो कौन करिया and तापर marital status equal to so हमें multiple conditions जितल दबा को चाहिबा you can give the and condition and you can give देखो मुझे but single दबा को बढ़िया बोलते हैं so you need to give and okay so just multiple and conditions of arachi you need to keep on giving and the for example mate first name should be John one second okay John नहले Julio अछि Rob for example John or Rob ए दु जन को डेटा दरकार तेतल कोन करिया और इक्वल टू Rob एटी एंड काहे के दोनों हमें गोटे कॉलम रे very good okay गोटे सिंगल कॉलम रे you should not give and condition any time जति देले कोन हबो you will not get any data यदि for example I am using and condition on a same column you will not see any records कहीं ना सेम नहीं कांसेप्ट एटा कि तमे गोटे सेल रे दीटा ना रहइबो नै केबे भी हला गोटे सेल रे जॉन और रॉब रहइबो नै दीटा ना रहइबो नै सेति पेका सेंति थिले फिल्टर हबो सेंति किछि रहउ नै सेति पेका फिल्टर हो नै जॉन दरकार और रॉब हां तम सेटी दरकार एटा दरकार माने गोटे सेल रे जदि दीटा रहयार थांता सेतले यू कैन गिव एंड कंडीशन but simple thing you need to understand ki same column over and condition you cannot put okay that is easy for you to understand okay same column re and condition you cannot apply ताटु बोले एटा मन रखि ताओ कि सेम कॉलम रे and condition use हेई परिया okay now for example how would a for example
I want to see filter condition. Filter condition geography key should be 11 or 22. Put range with you. 11 की 22 की 40 यही तीनटा ही दरकार. Geography key should be 11 or 22 or 40. कौन करिए हमें? मतलब ठीक है टाइम दियो. स्टार्टिंग रे का बोले वेरी रेडी को ना स्टेप बाय स्टेप जीवा. हां तापरे कौन लिखिया? where geography key is equal to single quote. এটা न्यूमेरिक अछि ना देखिया न हेले देन वी विल ट्राई. ओके सो हमर कोन इक्वल टू फॉर एग्जांपल आगे 11 तापरे और ना एंड और geography की इक्वल टू 22 और 40 geography is equal to 40. ओके एग्जीक्यूट हैला. सो जेतल मल्टीपल और कंडीशंस थाए we can go with in condition. Okay 11 22 40 रो देखिया ब्रैकेट रेशियो थाई पारे नॉर्मल ब्रैकेट ऊपर अछि. ओके सो दीटा रो रिजल्ट सेम. ओके एटा एग्जीक्यूट करले कि ता ऊपर एग्जीक्यूट करले you will get the same result. फर्स्ट नेम रे भी करी हबो टेक्स्ट रे दबा पड़ियो. फॉर एग्जांपल एटा को ही इफ आई वांट टू डू इट एठी कोन करिवे फर्स्ट नेम इन John comma Rob. Okay so now when I execute these two things it will give the same result. in माने और माने से बुझियो in लगे देले से और बुझियो. in माने ही और माने एटा नहले सेटा नहले जहा भी थिको मल्टीपल और in is nothing but multiple or conditions. Okay same power BI रे सेम ही होता ना किसी फर्क नहीं. राइट ହେଲା क्लियर. एटा न कह कि एटा कह दे ले जाई थांदा स्टेप बाय स्टेप जीवा. ओके दीटा जे और अले तो तळे और नहीं दीटा कोई कर तो गुडू है दीटा रे पाखा है थांदा. न सेति पंगा हमें आगे इक्वल टू देखिया तापरे और देखिबा तापरे इन देखिबा. ओके हां एंड कंडीशन भी देई परियो बट फॉर एग्जांपल सेम कॉलम रे केमति दबो सेम कॉलम रे एंड देई परियो ना मल्टीपल एंड तुमको एंड दबा पड़ियो कना अलग अलग कॉलम ना तमे एठी गोटे कॉलम बोली तमे गोटे कॉलम देकी इन रे देई दोछो एंड रे तमे मल्टीपल कॉलम दबो केमति देई परियो ना कॉलम ना तो दबा पड़ियो ना जेम थेले तो सेटा को यू हैव टू गिव सेपरेट. ओके तापर फॉर एग्जांपल गोटे रेंज दबार अछि. ओके कस्टमर ज्योग्राफी की 11 रो 22 भितर है. ओके सेतला हम कोन करिया बिटवीन यूज करिया. खाली रैंडम एग्जांपल्स नउची हैला बट बिटवीन केते 11 and 22 for example. Let's see. Okay 11 19 22 17 21. Okay so kichi 11 no 22 11 or 22 included here. Okay जदि exclude करियर थिबो 11 और 22 नंबर न थियो 10 नो 12 ना 12 21 ना सेमति नै करे तमे दबो. सो बिटवीन कंडीशन कोन हबो व्हेन यू वांट टू गिव ए रेंज गोटे रेंज एतल दबा को चाहिबो इंक्लूडिंग द नंबर्स
जो ता नंबर हमें दौचु से नंबर इंक्लूड करके जो रेंज दबाक चाहिए देन यू विल गो विथ बिटवीन ओके लाइक कंडीशन माने कोन See you 11 or 22 category order के होता है माने 11 or 22 not 11 not 22 कोई दो not 11 or not 11 22 एंती कोई करे राइट तापरे फॉर एग्जांपल ओके राइट मते कौन दरकार लास्ट नेम which is ending with son एंटी जॉनसन हे गला आउ कोन कार्लसन हे गला ओके समथिंग एंडिंग ओके एंडिंग विथ एल सेटा हमें अलगा भी देई परिया अल्टरनेट की रे भी देई परिया कि ईमेल आईडी रे देई परिया जोटी हेले भी फॉर एग्जांपल एंडिंग विथ सम पर्टिकुलर वैल्यू okay ending with some particular text value you want to do it so for example a requirement hela last name should end with son okay so start केंत करिया where को भी filter condition will start with where okay तापर को कॉलम ऊपर हमें फिल्टर करछु last name so now I will give like operator okay like माने कोन केमिति okay last name केमिति देखियार अछि last name should be quotes भितरे मोर ending should be son right so आगे मो परसेंटेज देबी तापर son लिखिबी ओके तापर क्लोज करी राइट लेफ्ट कोई so percentage माने कोन एठी percentage जगह रे you can put anything after that it has to be son सेही कॉलम रे जोटी मो परसेंटेज देली से परसेंटेज जगह रे किछि भी थाओ आई डोंट केयर बट तापर जो वर्ड मो देई सेटा एंडिंग होबा दरकार ओके तो परसेंटेज जगह डॉलर साइन बोले तो हां परसेंटेज नहीं नहीं परसेंटेज जगह रे तमे ना किछि भी रही परियो लास्ट नेम रे जेमती एटी जॉनसन अछि एटी जॉन जगह रे आउ किछि थांता हेले भी इट्स ओके बट इट शुड एंड विथ सन ओके सो व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस वन एटा देखो सब ना गुराक स्टार्टिंग अलग थाई पारे 2 लेटर्स थाई पारे 1 लेटर थाई पारे 10 लेटर्स थाई पारे किछि भी थाई पारे बट एंडिंग शुड बी son राइट हमर जेमते पावर बीआई रे भी अछि वी हैव एंडिंग विथ एडवांस फिल्टर रे फॉर एग्जांपल एठी वी हैव समथिंग कॉल्ड टेक्स्ट वैल्यू दरकार हमको ओके एटी देखो स्टार्ट्स विथ हे गला does not start ends with nike nahi okay but we have mane setere we can give mane starts with jeti starts with dabar achi okay starts with dabar achi kon kare hame eti for example gote query likhiya इधर लिखिए फॉर एग्जांपल तो एठी मु कोन करबी हां परसेंटेज मु चेंज करी फॉर एग्जांपल मु कहबी स्टार्ट्स विथ लास्ट नेम स्टार्ट्स विथ फॉर एग्जांपल जॉन दबा ओके स्टार्ट्स विथ जॉन सेतल मु कोन करी लाइक जॉन देखि तापर मु परसेंटेज देबी ता माने मोर स्टार्टिंग जॉन हबा कथा तापर किछि भी रहिला दैट्स फाइन इफ यू एग्जीक्यूट दिस वन everything will start with john okay एटा अलगा नेम अछि जॉनस्टन बट स्टार्टिंग हमरो जॉन रे हला ओके जदी मो कहबी जहां भी थाओ इट शुड कंटेन ओके फॉर एग्जांपल एटी कोन कार्ल अछि CARL ओके इट शुड कंटेन स्टार्टिंग थाओ मझिरे थाओ एंडिंग थाओ जहां भी थाओ से नेम रे इट शुड कंटेन ओके
ସେତେବେଳେ କଣ କରିବା content list ଅଛି କି ତା ଭିତରେ ନାଇଁ ଲାଇକ୍ ରେ ହି ଦିଟା ହାଙ୍କ ଇଏ ଦେଇଦବା starting ଆଉ ending ରେ ମୁଁ percentage ଦେବି ତାପରେ କାଲ ଦେବି ତାମାନେ କଣ it should contain ଯୋଉଠି ବି ଥାଉ it should contain starting हो ମଝିରେ हो ending हो wherever it is it should have ଏଠି ସବୁ starting ରେ ଅଛି for example ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଲମକୁ ରିଜର୍ଭ କରିବା ଡବଲ ସ୍ଲାଶ ନଟ ୟାର କିଛି କଣ ଅଛି कोनटा ହାର୍ଟ ଷ୍ଟାର ଲାଷ୍ଟ ରେ ଷ୍ଟାର କମେଣ୍ଟ ଲାଇନ कमेंट କରିବା ପାଇଁ का ତମେ डायरेक्ट ଏଠି for example डबल ये दो आईफोन दे दबो सेटा कमेंट हे जियो जो हमें देखे स्टार्टिंग में देखे एंडिंग स्टार्टिंग में तो हम कुछ वैल्यू ना सिखाई थाउ ना थाउ डोंट नो आई डोंट केयर एठी भी सेमती तमे परसेंटेज सान देचो जेदि तमरो गोटे ना खाली सान अछि सेटा नबो परसेंटेज जगह किछि भी थाउ किछि भी न थाउ इट डजंट केयर ओके I think we will stop here. Any questions online? Select from where? Okay, select रे किसी भी column दे परियो जोटा you want to see it in the result. From रे from which table से columns दरकार that you need to put. Where होची filter condition. Filter रे तमे and condition and operator use करियो or operator use कर परियो. Okay. जहाँ filter करियो को चाहिए accordingly you need to give. तो आधे टिके you need to focus on between our like condition. बाकी सब normal greater than less than greater than equal to less than equal to like that you can do. Okay. Query तमे जदि query को से सेव करिया को चाहिए तमे सेव करि परियो. Save SQL query बोले. नहले एटा को क्लोज कला बोले बे सेटा टाइम एटा मु ये कर दे कंप्यूटर मैंने हां हबो गोटे मिनिट so I'm putting all the queries here okay right तमे जदि एटा को सेव करिया को चाहिबो if I close it it asking to save तमे एटा को डेस्कटॉप रे सेव कर परियो खोले सेव खोलियो एटी खोलियो तापर जेतल खोलियो ए विंडो खोलियो एटा आ गोटे विंडो जदि ओपन करियो फॉर एग्जांपल एठी का जहां भी लिखलो आ गोटे विंडो ओपन करिया को अछि आउ थरे करियो दिस विल ओपन डिफरेंट विंडो okay okay then I am closing for today online kichi questions achi ki No, sir. okay okay then practice and come back if you have any questions we will address okay thank you all Yes, sir.